Today with us, Songul, Coral Guardian, and she's Yes. working on Pakistan Marines, Pakistan Oceans, and Marine Conservation Pakistan. yeah. And I met very rare people in Pakistan who are working on marine sciences or water. So let's meet her and ask her about all the world is very scared and very sensitive to water, its blue economy, its applications, its purity, and the water cycle, which is starting from our oceans and ending on our oceans. It's providing the life. It's the providing life. It's contain the life. Let's talk about that and how she sees about our waters, its present and its future. Yes, please. Assalamu alaikum, everybody. Thank you for having me. And as you said, like today is a water day, and it's a World Water Day. जबकि ये रोजाना होना चाहिए ना? Every day should be the Yes. water day. Every day should be an Earth Day. कि हमको हमारी daily life के अंदर, if every person on this planet invest at least 5 minutes of their busy life सिर्फ अपनी इन्वायरमेंट के लिए, चाहे वो समंदर के किनारे में जाके अपनी जहां पर आप बैठे हुए वहां पर जो भी आपको कचरा नजर आया वो उठाया, या जैसे बी एन एक्टिविस्ट इन योर एरिया कि आपका सीवेज लाइन खराब है, ये खराब है, लोगों का मतलब टू अवेकन, टू ऑब्जर्व, टू नोटिस, नोटिस इन द सेंस कि लोग जैसे कराची में जब से मैं यहाँ पर रहने शुरू करी हूँ, तो जितने लोगों से मिलती हूँ वो लोग को पता है नाले जो है ना गंदे हैं, वी हैव नो वाटर, वी हैव वाटर वाटर लाइक वाटर सिक्योरिटी है भी नहीं. So when you ask all these people, in their mind is they understand कि हाँ ये प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रहा है या ये क्यों कुछ नहीं कर रहा है, फिर ब्लेमिंग गेम शुरू हो जाते हैं. जबकि हमको किसी को ब्लेम हम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये इंडिविजुअली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं है, चलो अर्थ के लिए भी नहीं है, लेकिन अल्लाह के लिए, क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज दिया है जो इट इज नॉट इजी, जैसे मैंने आपको एक प्लेनेट दिया है जिसमें आप जिंदा रह सकते हैं अगर आप इस प्लेनेट का ख्याल रखें, मतलब आपकी स्पीशीज कैन प्रोग्रेस अहेड, कैन इवॉल्व टू द हायर बीइंग ऑफ ह्यूमन. क्योंकि अभी जैसे मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है कि ग्लोबली हम अभी 9 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में ना, इसी प्लेनेट में. तो लोग कहते हैं कि हम इंसान हैं, जो अल्लाह ने बनाया वही इंसान है. मैं कह रही कि हाँ हम इंसान हैं लेकिन फुल्ली इंसान नहीं बने, क्योंकि हमारा लाइक मेंटल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, मतलब वो सारी चीजें मिसिंग है. तो इवोल्यूशन का स्केल प्रोग्रेस पे नहीं जा रहा है, क्योंकि उसमें अवेयरनेस कम है. तो इसलिए लोगों को अगर इसलिए लोगों को इतना कनेक्टिविटी समंदर से है ही नहीं, पानी से है ही नहीं. एक एक ये कहना चाहती हैं कि we do not own our oceans, that we we need to own our planet, we need to own our like property, we need to own our city, our We need country to and our connect to ocean. everything. We need to connect to everything to understand it. जैसे मैं Yes. आपको कुछ भी बोलूं, लेकिन उसमें मैं आपको एज अ ह्यूमन जब हम बात करते हैं ना, ह्यूमन टू ह्यूमन जब हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम आगे अगले वाला मैक्सिमम 40% आपको अंडरस्टैंड कर सकता है. 40% जो भी आप बोल रहे हो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर बाकी अपने तरफ से डालते हैं. ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये जैसे हम बने हैं ना. तो इस वजह से मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा. Like, so when you want to explain somebody something, it will take a very long time to make somebody understand, because Yes. everyone has their own perception. अगर मैं Yes. जाके एक मोहल्ले में जाती हूँ
और मैं उनको नाले के बारे में बात करती हूँ, और दे वो लोग कंप्लेन करते कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, हम नाले का क्या सोचे। तो आपके पास पीने का पानी इसलिए नहीं है क्योंकि आपका नाला नाले की वजह से, क्योंकि सारा कंटेमिनेट हुआ हुआ है। जैसे हमारी कुदरती नेचुरल स्वीट वाटर पॉकेट्स हैं अंडरग्राउंड, जो नेचुरली वो मीठा पानी स्टोर करते हैं। अभी वो जितने भी आप कराची में देखे, इवन इन बलोचिस्तान, बहुत जगह में वो सारा खारा पानी हो गया। लेकिन अगर इफ यू गो बैक, इस एरिया में लोग पहले एग्रीकल्चर भी कर सकते थे, उनका फर्टाइल लैंड था। जैसे जिस एरिया में मैं काम करती हूँ, मुबारक विलेज, वहां पर पहले मछली भी बहुत थी, बहुत ज्यादा, उनको किश्ती पे जाने की जरूरत भी नहीं थी। उनके पास नेचुरल पानी जमीन के अंदर था, वो लोग सब्जियां उगा रहे थे, सब कुछ होता था। लेकिन अगर आप अभी जाएं, उनके पास कुछ भी नहीं है, लाइक एब्सोल्युटली नथिंग। सो सो एंड हम जी जो बात बोलिए। कर रहे हैं कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन, इंडिविजुअल रोल एक चीज को संभालने में, बिल्ड करने में, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ओशंस या टूवर्ड, और यही नालाज और हमारी सोसाइटी अल्टीमेटली मीट्स आवर ओशंस। Of course, we need our ocean. If our country is where the ocean is, means we are part of it. We are 100% dependent on it. It is our source of income and our source of resources. या इट्स ए And our ब्लू food इकोनॉमी। या security, most importantly, कि हमारा food security है। चलो ऑन लैंड हमारा फूड सिक्योरिटी नहीं है, अब समंदर के अंदर भी नहीं होगा, फिर होगा क्या? आपको यस। पता है पाकिस्तान में मोर देन 120% समंदर इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें से 120%, एक तो 100 होता है, लेकिन आप 120 चले जाए, जिसमें ऑन रिटर्न समंदर को कुछ नहीं मिल रहा। लाइक 100, अगर आप किसी को 120% इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका ये बनता है कि चलो 20%, चलो 30% मैं इसको प्रिजर्व करूं, मेरे बच्चे कम से कम वो चीज देख ले जो मैं देख सकता हूँ। यस, सस्टेनेबिलिटी कि हम ले रहे हैं और दे क्या रहे हैं, मतलब हम एक बैलेंस तो कर पाए उसको। हाँ, ये क्योंकि हम क्या अपने जैसे लोग हैं, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ भागेंगे? हम्म। छोड़ के क्या जा रहे हैं? डिजीजेस, गंदगी, मतलब इनसिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, मतलब यस। कॉम्प्लिकेशंस है ना। या सो इट इज ऑल, वो सारी चीजें, वो सारा फैक्टर है। एंड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इज सैनिटेशन, लाइक यस। टू हमारे सैनिटाइज द होल यस, हमारी बैलेंस। इनहेरिटेंस और हेरिटेज में जो प्राइमरी हमारी ऑनरशिप है वो हमारी वाटर एंड सैनिटेशन, जिसको हम इम्प्रूव करें और हम अपने हेल्दी ओशन या समंदर को, स्टेटस को मेंटेन रखें। यस, डेफिनेटली वी हैव टू डू दैट। एंड यहाँ पर इवन आप क्लाउड्स की बात कर रहे थे, जो नालों से वेपराइज हो रहा है, इसके अंदर ऑब्वियसली यू नो अबाउट एयर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स एयर के अंदर भी होते हैं। अब हम्म। माइक्रोब्स में भी पॉजिटिव हैं, नेगेटिव भी हैं। तो जब वो हम्म। वेपराइजेशन होता है, हम्म। उसमें क्या होता है, वो माइक्रोब्स जो है ना क्लाउड्स में भी चले जाते हैं। तो जब बारिश होता है, यू विल सी, हम्म। पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता है कि जब पहला बारिश आता है, तो बारिश की नीचे जाना नहीं चाहिए। लाइक यू हैव टू टेक केयर नॉट टू अवॉइड रेन, गेटिंग वेट बाय द रेन। तो ये लोगों को नहीं पता है, क्योंकि पहले ये नहीं था, लेकिन अब ये हो गया बिकॉज हमारा कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है। सो यू विल सी, जैसे वो लोग बारिश में खेलेंगे, दूसरे दिन जो है ना वायरल इन्फेक्शन फैल फैल जाता है। द होल सिटी गोज थ्रू इट, एवरी हम्म। अदर पर्सन। ओके, और अगर हम इसको और नीचे करें, ये एक साल में एक इंसान कितना दफा बीमार होता है, हम्म। कितना दवाइयां ले रहे हैं, हम्म। और मोस्ट जो दवाइयां ले रहे हैं, दे बीन डिजाइन्ड फॉर ओल्ड वायरसेस। जो हम अभी की नया वायरसेस है, नया पैरासाइट्स है, नया फंगी है, वो ऑलरेडी एडवांस हुए हुए हैं, तो जो दवाएं आप ले रहे हैं वो कामयाब भी नहीं होंगे। हमारी हर दफा यूनाइटेड नेशन गिव्स अस अ टैगलाइन, अ थीम ऑफ एवरी ईयर, दिस ईयर द ग्लेशियर preservation, and the glacier is directly linked with our oceans.
यहाँ से जो इवेपोरेट होता है वही ग्लेशियर पे जाके बैठता है, जिसे हम स्नोफॉल कहते हैं. How you see, especially in the Yes. perspective of Pakistan, Sorry? how you see It will all. affect when sea levels rise, it will affect everybody. Hmm. Like it will flood some areas, and it's not happening the first time. पहले भी हुआ था ये. मतलब planet अब जैसे climate की जो बात होती है, क्लाइमेट इवन टॉक्सिक भी हो जाए ना, तो प्लैनेट सही वो रीजनरेट हो जाएगा खुद ही बखुद ही. इवन इन टॉक्सिक जहां पर कोई भी नहीं सर्वाइव कर सकता, लेकिन उसके अंदर ये एक सेल definitely will survive. There तो will be one cell that survive and it will go through the whole evolution process. अब या जैसे मैं क्या बोलती हूँ, मैं इसको क्या बोलती हूँ, अल्लाह का सूप है. अल्लाह ने जैसे सूप की तरह सारी चीजें बनाया है और मिक्स किया है, how you see, और you live वो in हमेशा Karachi. वो रिवर्सिबल होगा. हम्म. आप कराची में रहती हैं, you live in Karachi, and how you see that the world is now talking about the carbon sequestering through our oceans, a carbon sink. The word sink actually, whatever the rivers carry, it dumps into our oceans. So how you see our atmosphere, especially in Karachi, when yesterday I was seeing in news that the temperature rises up to 39, and 20 years back, the air currents were there, and all the pollutions and the capturing the air is very better even than in Lahore and in the Pakistan, because the current air currents and the moisture level and the things, and this all keeps your environment very clean and green. And is now when we see, do you think the water quality in the seashore at the all the coastal line is that much that it can have a healthy coral or shrimps or fish? Unfortunately, no, they all died out. We can find some जैसे चरना पे थोड़ा से रह गए हैं. You can find some stony corals. They are a bit more stronger in resilience. तो वो शोर पे आपको नजर आएंगे, उनकी मुंह भी बड़े होते हैं. अब लोगों को ये भी नहीं पता है कि कोरल, क्योंकि जब मेरी बात होती है लोगों से कि वो पूछते हैं कि कोरल क्या है, मैं बोलती हूँ कि जो कुरान में लिखा हुआ है मरजान. तो वो बोलते हैं कि मैंने सोचा कि मरजान ये एक पत्थर होता है. मैंने बोली कि नहीं, मरजान कोरल है, और कोरल पत्थर नहीं, एक जानवर है. और जो आपको पत्थर की तरह जो लग रहे हैं, उसके अंदर जो सुराखें होते हैं, वो ये एक सुराख, ये एक पोलिप कहलाते हैं. वन कोरल पोलिप, मतलब ये एक जानवर है वो. और वो पूरे जैसे पत्थर की जो लग रहे हैं और उसमें सारे सारे सुराख है, वो पूरा कॉलोनी कहलाते हैं. इस हर सुराख में ये एक पोलिप रहता है. इट्स इंडिविजुअल कोरल, and they play very important role in the ocean. They play a very important role in the biodiversity, in housing, in the food chain, and even medicine for us. So and iski decline जिसे हमने already 5-6 species have already been extinct in Pakistan. और मसला ये है कि हम corals कहीं और country से आके इधर नहीं लगा सकते, because उसमें पेड़ we will damage environment where we cannot reverse it. Yes, very sensitive rehabilitation. Yeah, so very, Yes, it's a deep, it's a it huge will science. change Yeah. the land formation, and the whole maybe half of Pakistan will be underwater. You It's a never big know. domain, yeah. It's a big domain, and more talking on it's very interesting, and it requires much more time. But we shall, due to time restrictions, we shall be stopping here, and we'll reconnect with you to learn more about our oceans, our ecosystem, our water system, In our the role of. ocean, we have a lot of solid waste and sewage waste. These are two, and we have three main big issues that Yes. are, if we stop it, we can restore not only the ocean but our water, sweet water resources. We can restore even sweet water pockets.
and we can have a water security. We need to have a water security. हम बगैर पानी के survive कर नहीं सकते हैं, और scarcity बहुत ज़्यादा हो रहा है due to contamination. तो पहला problem है sewage waste. Second problem है bottom trawlers. जो बड़े बड़े बोट्स होते हैं वो इलीगल प्रैक्टिस है, अंडर फ्लोरा एंड फाउना एक्ट वो लोग वो काम कर ही नहीं सकते. ऑलरेडी वी हैव दिस एक्ट इन आवर लॉ, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा. और बॉटम ट्रोलर्स वो पूरी जितना भी मरीन हैबिटाट्स है, जितना भी कोरल रीफ्स है, जितना भी जो भी है, वो सारा निकाल के वो उसको सी बेड को बिल्कुल फ्लैट कर देता है. तो फिर मछलियों के लिए नगर है, ना खाना है, कुछ भी नहीं है. और वहां पर फिर दोबारा कुछ उगेगा नहीं जब तक हम इंटरवीन ना करें. और इस डिक्लाइन की वजह से इट इफेक्ट्स आवर एयर दैट वी ब्रीथ. It we are slowly suffocating ourselves, and we are contributing even with the climate shift. And not shift, climate already shifted along. It's not even shift, it's a transition. वो transition होता है. Whatever we put in is what we're gonna get. तो और तो यही सीन है कि we need to stop these three things, or here we have a chance of recovering and being on a positive side. Otherwise, the destruction starts not only in the solid waste in the ocean. वो उधर तक पहुंचता है कि आपकी जेब में, आपकी प्लेट में, आपके घर के अंदर, आप जो सांस लेते हैं, जो पीते हैं, वो सब में फिर वो Yes. It's in there. It's inside your system. Whatever you see outside is what is inside you. Yeah. So, Yes. As we seeing in the scientific journals and the social media, the PFAS, it's getting headache for US and for the Europe. And same, we are also the part of this planet. We are not much far from this water. So exactly. whenever we speak, we discuss, we learn more. The climate change, the climate shift, and today you said the climate transition. So this is awesome, and a human have an energy, its Because brains. even we're talking about glaciers, like if you look at South Pole, they did the drilling and they discovered so many things through the past, because they do the drill and then they go through the analysis of it, and they can tell what was happening in what time, what Earth went through, what conditions was there, what bacteria, what microbes were there, what was happening. It's a data that you can analyze everything accordingly. So if you go into the past, you will see that the planet been through so many processes, so many of climate shifts. And right now it's not a natural climate transition. It's not a natural, it is the one that we contributed. और हमारा जो contribution है वो starts from what we eat, what comes out, and what goes into the environment, and what we buy, what we consume, what we desire. मतलब ये सारी चीजें impact कर रहे हैं हर चीज पे. Like so, तो caution is very important. लेकिन awareness is it's lacking a lot of awareness. तो इसलिए हम ये videos बनाते हैं कि लोग सुन लें और समझे. And so in Pakistan, let's say, even no matter what happens, if planet it has its own, मतलब आप nature से खेल नहीं सकते हैं. समंदर का mercy भी नहीं है, and समंदर हमारे हिसाब से नहीं चलता. वो अपनी law of the planet and then law of the universe चलता है. तो हमको अपना सोचना है कि are we gonna fail our exam on this planet? क्योंकि लोग यहाँ पर रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं एक वजूद हूँ और मैं ही सब हूँ, जबकि आप वजूद नहीं है, आप एक रूह हैं. आप सिर्फ वजूद को एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि आप एक एग्जाम दे रहे हो. लाइक द मोस्ट एक्सप्लेनेटिव आई कैन से कि आप समझे कि आप जैसे अपने बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं, आप उनका यूनिफॉर्म पहनाते हैं ना, तो ये हमारा यूनिफॉर्म है बेसिकली. And we are doing our science project on a very micro level scale,
क्योंकि अल्लाह ने Yes. यूनिवर्स बहुत बड़ा बनाया है. So even us, even microbes in the air, everything coexists and has a purpose. And even us, we have a purpose, and we have a very important purpose क्योंकि we can communicate, we can build things where we are called so-called intelligent species. So we need to take care of everything. We need to coexist. वो coexistence, वो connection नहीं है. Songul, thank you very much for your precious time, and we'll connect again. And take care. Okay. Yeah, Okay, and thank you. yeah, thank you. All the best. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah.